Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. I am Saman, your GK teacher. Now in GK, I am going to teach you a chapter Mission Space, which is on Unit 2, Science and Technology, and it is on page number 24. Mission Space. In this chapter, we are going to learn about the first satellite, the first person which go in the space, first woman to travel in space, and some different views about different persons which travel in the space, who travel in the space. Now, first of all, we all have to know that what is satellite. What is satellite? A satellite is an object in space that orbits or circle around the bigger object. Satellite is an object in the space. एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्पेस में होता है, ये वो बिगेस्ट ऑब्जेक्ट के अराउंड ऑर्बिट करता है और ये सर्किल करता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट. You all see moon. Moon is an natural satellite which orbits around the earth. Now we come here about artificial satellite. Artificial satellites are man-made or human-built, which are objects that orbit the earth and other planet in the solar system. And artificial satellites are sent into the space, and scientists use them to study the universe, forecast weather and so on. हमें भी घर बैठे ही ऐसे वेदर की जानकारी भी हम लोग इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं. दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट सैटेलाइट्स विच इज सेंट बाय our scientists in the space, and that is all because of artificial satellite. And now here comes one more topic. Before you all need to know that first artificial satellite to go around the earth was the Russian satellite Sputnik 1. Sputnik 1 is the first ever artificial satellite which was sent into the space, and it was launched in October 1957. It was launched in October 1957, and it is the first satellite. Then what is the first satellite? Which is the first satellite to go around the earth? Is the Sputnik 1. Now, one more topic I have to, you all know that cosmonaut and astronaut. Then here, what is the difference between cosmonaut and astronaut? Cosmonaut उन people को कहते हैं, मतलब वो those people which are trained and certified by the Russian Space Agency to work in space. जो रशियन स्पेस एजेंसी के द्वारा ट्रेंड किया जाता है या सर्टिफाइड किया जाता है स्पेस में काम करने के लिए, तो वो पर्सन कॉस्मोनॉट कहलाते हैं. और एस्ट्रोनॉट वो पर्सन हुए जो ट्रेन किए जाते हैं और सर्टिफाइड किए जाते हैं नासा के द्वारा. नासा, ESA, CSA, जो वो स्पेस में, मतलब यहाँ काम इन लोग का सेम है, बस ये इन लोग का ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन बस अलग अलग एजेंसी के द्वारा होता है, जिसकी वजह से इनके नाम में डिफर है. तो कॉस्ट्रोनॉट आर दोज पीपल विच आर ट्रेन एंड सर्टिफाइड विद द रशियन स्पेस एजेंसी, एंड एस्ट्रोनॉट आर दोज पीपल विच आर ट्रेन एंड सर्टिफाइड बाय NASA, CSA, ESA to work in space. Now we come on that Yuri Gagarin. Yuri Gagarin was the first human being to go in the space. On 12 April 1961, Yuri Gagarin become the first human being to go in the space. And the first woman to travel in the space was Valentina Tereshkova, another Russian cosmonaut, on 16 June 1963. And the first man to travel in the space is Yuri Gagarin, and the first woman to travel in the space is Valentina Tereshkova. Now, Neil Armstrong. You all have heard the name of Neil Armstrong. Neil Armstrong is an American astronaut who became the first person to step on the moon. The first person to step on the moon was Neil Armstrong. तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो फर्स्ट पर्सन है जो मून पे ट्रैवल किए थे. कब? 20 जुलाई 1969.
ही ट्रेवल इन द स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11। किस स्पेसक्राफ्ट से गए थे? अपोलो 11। स्पेसक्राफ्ट का नाम था अपोलो 11। अब है स्पेसक्राफ्ट। व्हाट इज स्पेसक्राफ्ट? ए स्पेसक्राफ्ट इज अ व्हीकल और अ मशीन डिजाइन टू फ्लाई इन द आउटर स्पेस। आउटर स्पेस में ट्रैवल करने के लिए ये एक ऐसा व्हीकल है, इसी से ट्रैवल किया जाता है स्पेस में। और उस स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या था? अपोलो 11, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ट्रैवल किया था एंड बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून ऑन 20 जुलाई 1969। और उनके साथ और भी एस्ट्रोनॉट थे, गिनगे माइकल कॉलिंस, एडविन एगिन, बज एल्ड्रिन। Then he traveled along with these three astronauts. Now, the last person to walk on the moon was an American astronaut named Eugene Cernan. तो लास्ट पर्सन जिन्होंने ट्रैवल किया था तो वो एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे, उनका नाम था यूगिन कर्नेन। In December 1972, he was a Navy test pilot and also an engineer, and he was also the commander of Apollo 17. Now, Rakesh Sharma. Rakesh Sharma was the first Indian citizen in space to travel. He was also taking part in a joint Indian-Soviet space mission, and Sharma and the two other Soviet astronauts flew on the Slight Space 7 station on 3 अप्रैल 1984। और उन्होंने जब स्पेस स्टेशन में राकेश शर्मा दो अलग सोवियत कॉस्मोनॉट्स के साथ 3 अप्रैल 1984 को उन्होंने स्पेस स्टेशन में ट्रैवल किया था और अर्थ पे लैंड किया था 11 अप्रैल को। तो राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू ट्रैवल इन द स्पेस। And we all know that the cosmonaut are those person which are trained and certified by Russian agency, and Rakesh Sharma was also trained by Russian agency, so he is also a cosmonaut, and he was also an Indian military pilot. He also take part in the Indo-Soviet space station. You all know that there is a spatial station research assembled and launched in space. In the 1990s, International Space Station was launched in collaboration 16 countries के collaboration के बाद एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च किया गया था 90s में। ये दैट वाज अ यूनिक स्पेस रिसर्च इन द अर्थ ऑर्बिट। वहाँ पे एक यूनिक स्पेस रिसर्च है अर्थ के ऑर्बिट पे, जहाँ साइंटिस्ट रुकते हैं और स्पेस के बारे में रिसर्च करते हैं। तो उस स्पेस स्टेशन का नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, विच इज़ लॉन्च्ड इन 1990s with the collaboration of 16 countries, with the collaboration with 16 countries. अब यहाँ पे आते हैं कि हमारे इंडिया में मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया गया था, या एक मंगलयान स्पेसक्राफ्ट बोला जाता है, 5 नवंबर 2013 को। और जो ये इसको मार्स में भेजा गया था तो इसका नाम है मार्स ऑर्बिटर मिशन, शॉर्ट फॉर्म इज मॉम। तो देन द मॉम वेंट इनटू द मार्स ऑर्बिट सक्सेसफुली ऑन 24 सितंबर 2014। तो इंडिया का पहला अपना इंटरप्लैनेटरी मिशन मार्स ऑर्बिट मिशन के थ्रू मंगलयान पे भेजा गया था, और ये जो है और मार्स ऑर्बिट में ये सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था। और इसने पहले सेंड किया 5 नवंबर 2020 को, और ये वहाँ सक्सेसफुली लॉन्च हो गया था 24 सितंबर 2014। नाउ हियर इन दिस चैप्टर यू ऑल लर्न अबाउट द फर्स्ट artificial satellite, first person to go on space, first woman to travel in the space, first man to travel on the moon, last person to travel on the moon, first Indian to travel in the space, and what is the International Space Station, and about Mars orbiter mission. Now here is some question from this chapter. Kindly you fill up in your book. I am dictating. Who was the first American woman space traveler? American space traveler कौन से? Who was the first American space traveler? तो that is Sally Ride, STALLY
double L-Y is Charlie. Right. Now, how many people have walked on the moon so far? अभी तक कितने पीपल ने मून पे ट्रैवल किया है? तो टोटली हाउ मेनी पीपल? 12. Which Indian born US astronaut downed when her space shuttle Columbia disintegrated while returning to the earth? कौन से इंडियन बॉर्न, मतलब ये कि भारतीय जो इंडियन बॉर्न यूएस एस्ट्रोनॉट थी जिनका स्पेसक्राफ्ट जब वो अर्थ पे लैंड हो रहा था तो वो वहाँ पे वो एक्सीडेंटल डिसइंटीग्रेट हो गया था जब अर्थ पे वो कर थी, तो वो कौन सी थी? तो वो कौन से कॉस्मोनॉट एस्ट्रोनॉट थी? तो वो थी कल्पना चावला. नेम द फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट. पहले स्पेस टूरिस्ट का नाम बताना है फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट हु पेड फॉर द टिकट फॉर अ फ्लाइट टू स्पेस इन 2001. दैट इज डेनिस टीटो. Dennis Tito was the first space tourist from the United States who paid for his ticket. ये बिजनेसमैन थे और इन्होंने अपने स्पेस के फ्लाइट के लिए 2000 में इन्होंने खुद पे किया था और इनका नाम क्या था? डेनिस टीटो. Now last question is, which was the first animal to go into the space? So which was the first animal to go in the space is dog. Dog was the first animal to go into the space. Now your chapter is over. You all will keep it in your mind that what is the first satellite, which is the first satellite, which was the first person to travel in the space, which was the first woman, who was the first woman to travel in the space. Now these are some information about this space. Now keep revising your chapter. Okay children, thank you.